Okay, so today it's paper 1 of May-June 2022, and pure maths 1 is the paper. You have 1 hour 30 minutes to solve this, and the paper is of 75 marks. Starting from the question number 1, what does it say? It says integrate 10x power 5 plus 6x cube minus 3 upon x square dx. So there is one change that we need to do, और वो क्या है बेटा आपके पास कि आपको तमाम terms should be in the numerator. 10x power 5 6x cube minus 3x power minus 2. So what we are going to do, we are going to integrate it. How we are going to integrate it? Add 1 in the power divided by the power. Add in the power divided by the power. Add in the power minus 2 plus 1 is minus 1 divided by the power. Let's see. So it says, give you answer in the simplest form. So देखो यहाँ पर 2 3 are 6, 2 5 are 10 is going to be cancelled, and you are going to have 5x power 6 upon 3. 2 to the 4, 2 3 are 6. 3x power 4 upon 2. And this minus is going to be shifted in the numerator. It becomes minus minus plus. And x power minus 1 in the denominator becomes 3 upon x, positive power 1 plus c. This is going to be your final answer. Then we have this question in the triangle ABC. AB is 21, BC is 13, angle BAC is 25, angle AC is x. Let's just draw a triangle ताकि एक structure पैदा हो जाए. You can have an idea कि भाई कौन सी value कितना दी है. This is A, B, C. AB is 21 centimeter, BC is 13 centimeter, and angle BAC is 25. Angle ACB is x. All right. So what we are going to do, we are going to find out using the sign rule. They have already told us कि भाई आप किस तरह मालूम करो. So they have told us कि भाई sign rule इस्तेमाल करें, find the value of sin x up to 4 decimal place. So we know this कि sin x divided by opposite side. This is the sign rule. Sin x divided by opposite side is equal to sin 25 divided by opposite side. ठीक है ना? You're going to cross multiply these values क्योंकि मुझे sin x की value चाहिए. I don't want x value. I want sin x value. 21 इधर उल्टा हुआ. We're going to put it in the calculator. The value of 21 into sin 25. 21 into sin 25 divided by 13. इसमें एंगल डिग्री मोड में हो आपके पास, बिकॉज एंगल इज इन डिग्री. 25 डिग्री. 0.68269 4 डेसिमल प्लेस में देना है. सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर इनटू 5 डेसिमल प्लेस फर्स्ट, और फिर इसको 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर देंगे. 0.6827. दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x. Given also that AB is the longest side of the triangle, right? This side AB, this is the longest side of the triangle. Find x, find the value of x. Give your answer to 2 decimal place. क्या आप x मालूम करके दिखा दो और अपने आंसर को 2 decimal place में आंसर दें. तो देखो x मालूम करने के लिए for part T, we have already got the equation in part A कि sin x बराबर है 0.6827 के. So I'm going to put sin inverse. I'm going to get the working value 0.68269. The working value is input कर लेता हूँ. Sin inverse answer is going to be 43.054. अब सर ये आंसर निकालना था, ये तो आंसर आ गया सर. ये बात लिखने की क्या जरूरत थी? What was the purpose of this line? Given also that AB is the longest side of this line. देखो बेटा, अगर आपको ये बात
you should know this कि साइन जो है ना, एक वैल्यू पर, सेम वैल्यू पर दो आंसर देता है. एक आंसर देता है एक्यूट और एक आंसर देता है ऑब्ट्यूस. सही है. सो यहां पर जो इसने आंसर देना है वो एक्यूट देना है. कैलकुलेटर से जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली गोइंग टू बी एक्यूट ओवर हियर. अब देखो यहां पर x ये वाला एंगल आ रहा है व्हिच इज 43.04. ये दिस इज द x एंगल. नीचे ले आओ. दिस इज द x एंगल एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंगल. तो अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो बेटा ये एक्यूट नहीं होगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 43 कह देता हूं, लेट्स से दिस इज द 43 एंगल, लेट्स से फॉर अ टाइम मैं इसको 43 कह देता हूं. तो बाकी दो एंगल 180 माइनस 43.054, यानी इसके बाद दिस एंगल इज 25, मैं 25 भी माइनस करवाता हूं. दिस एंगल इज गोइंग टू बिकम 11.946. तो यहां पर तो एंगल एट बी इज द लार्जेस्ट एंगल बन रहा है. इफ आई पुट x as 43.054, so I got the value of b angle which is the largest angle, but they said c per largest angle है, x is the largest angle. The angle opposite to the side AB के opposite side है which is the x angle, it is the largest angle. तो अगर मैं इसको एक्यूट एंगल लूंगा x को तो बेटा लार्जेस्ट एंगल b आ जाएगा. So like I told you कि इसको बेटा सेम वैल्यू पर हमारे पास दो आंसर देता है. तो दिस वन इज एन एक्यूट एंगल. लेट्स फाइंड आउट द ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल मैं कैसे मालूम करूंगा? 180 माइनस 43.054, which will give you the answer 136.946. आपका आंसर आएगा 136.95. They want the answer in 2 decimal place, तो मैंने 3 decimal place में लिखकर फिर बेटा अपने आंसर को, एंगल को मैंने x को कन्वर्ट करा 180. अब मैं अगर x की वैल्यू 136.95 रखता हूं तो 180 में से 136.95 माइनस 25, तो b इज गोइंग टू बी 18.04054. तो बेटा आपके पास देखो सबसे लार्जेस्ट एंगल x ही बन रहा है. द साइड अपोजिट, द एंगल अपोजिट टू AB. तो बेटा AB का x का सबसे लार्जेस्ट एंगल 136.95. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. Now in part 3 it says show that this an expression in terms of surds is an integer and find its value. यार इसका आंसर एक इंटीजर आ रहा है. सर ओके, अगर इसका आंसर एक इंटीजर आ रहा है तो मैंने सबसे पहले क्या करा इन पार्ट 1, मैं आपसे बोलता हूं कैन आई ब्रेक 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. विदाउट कैलकुलेटर काम करते हैं हम लोग. 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 9s 2 45s 3 15s 3 5s and 5 on the 5. So if I write 180, तो देखो 180 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 3 into 3 into 5. तो 2 and 3 both are twice in the square root. तो सिंगल बन के बेटा they are going to be outside the square root. It will become 6 root 5. Similarly, what I'm doing here, मैं 80 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं यहां पर. 240s 20s 5s and then I got 5 on the 5. So I can write 80 square root as like this. तो देखो आपके पास 2 is twice, 2 is twice, so we are going to, after square root they are going to come back out of the square root.
So it becomes 4 root 5 here. और root 5 to denominator में लिखा उसका एड्रेस रहने देंगे. At the end, what I want to write, under root 80 minus under root 180 minus under root 80 upon root 5 can be written as 6 root 5 minus 4 root 5 upon root 5. I'm going to take the common root 5 in the numerator. Root 5 से root 5 गया, 6 minus 2 minus 4 कितना हो गया 2. So yes, we got the integer after simplification. ये हमारे पास बड़ा integer निकल कर आ गया. They are saying simplify this expression or give your answer into a plus b root form. You have to give the answer in the, there's no a plus b root form, b root 5 form, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो कुछ भी नहीं है. मतलब b की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, a की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है. कहने का मकसद है डिनोमिनेटर में रूट 5 नहीं है. there's only root 5 in this expression. डिनोमिनेटर में देखो रूट 5 यहां पर है, लेकिन जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसमें we don't have root 5 in the denominator. तो बेटा I'm just going to copy this question. मैंने यहाँ पर कॉपी करा इसको. I'm going to multiply it by the conjugate of the denominator, that is 7 plus 3 root 5. तो देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 4 root 5 minus 5. और बेटा डिनोमिनेटर में a minus b, a plus b, a square minus b square. अब देखो यहां पर 49 minus 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 3 root 5 का स्क्वायर 45. I'm going to multiply these two brackets. 4 root 5 multiplied by 7, 28 root 5. 4 root 5 multiplied by 3 root 5. So 4 these are 12. Root 5 into root 5 is 5. Minus 5 into 7, minus 7 5 are 35. Minus 5 into 3 root 5 is going to be minus root 5. Minus 15 root 5. देखो बेटा 28 root 5 is going to be same. 12 5 are 60, minus 35. 15 root 5 हमारे पास आ गया आंसर. 49 minus 45 is going to be 4. Now we have the same like terms here, root 5 वाली terms. 28 minus 15 is going to be 13. Root 5, 16 minus 35, it is going to be 25 upon 4. अब देखो जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना उसको जरा गौर से देखते हैं. लिखा हुआ है a plus b root 5. क्या ये a plus b root 5 की फॉर्म में? सर नहीं, देखे फर्स्ट टर्म में रूट 5 नहीं आ रहा, सेकंड टर्म में रूट 5 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, अरेंज कर लो. 25 plus 3 root 5 बातें की है अपॉन 4. अब सर यहां पर रूट 5 वाली टर्म इज सेपरेट टर्म एंड ए इज अ सेपरेट टर्म. यहां पर फ्रैक्शन में सब कंबाइन हुए हुए हैं. लेट्स जस्ट ब्रेक द फ्रैक्शन. root 5 upon 4. ठीक है ना. if they are going to ask you find the value of a and b, although उन्होंने पूछा नहीं है बट वही बता रहे हैं कि a and b are rational numbers. तो बेटा you can verify this कि यहाँ पर a और a की वैल्यू, वैसे they haven't asked us कि a और b की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू 25 by 4 हो गई and b की वैल्यू 13 by 4 हो गई. and these are yes rational numbers. ये rational numbers हैं. you don't have to tell this. so मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ये rational numbers हैं हमारे पास. they are not irrational numbers. ठीक है. now in question number 4 they have given us a diagram. sketch दिया हुआ है y equal to fx फंक्शन का
बताया भी नहीं कौन सा फंक्शन है. Now they are asking you the curve is had maximum point -1, 0. P -1, 0 है, ये minimum point है. This is the minimum point. Okay. And maximum point Q 3/2, 2 over here. Then y equals to 1. The equational line y equals to 1. This is the y equals to 1 line. Is the only asymptote to the curve. Asymptote means this curve right over here will not go beyond this line. यानी यूं करके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी. y equal to 1 से ऊपर नहीं जाएगा. यहीं पर ये साथ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. ये वाला कर्व का ये पोर्शन बेटा इस लाइन के नीचे नहीं आएगा. ये देखो इसके साथ साथ y equal to 1 के साथ साथ चलता जाएगा. ठीक है ना. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट. On a separate diagram, sketch the curve with the equation y equal to fx minus 2. So this is the vertical translation. Curve 2 steps नीचे जा रहा है बस. That's it. So on a separate diagram they're asking us कि भाई आप ये काम करें. तो मैं बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. Okay, what I'm doing here, अच्छा, this is very important to know कि आपके पास this q coordinate over here, it is 3/2, 2. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी. और p पॉइंट जो है ना वो हमारे पास -1, 0 है. दिस इज द p पॉइंट -1, 0. वी हैव टू शिफ्ट द ग्राफ. या मुझे ये f of x -2 का ग्राफ चाहिए ना. सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड 2 स्टेप्स. तो डाउनवर्ड 2 स्टेप्स आपको दिखाने हैं. हाउ आर वी गोइंग टू शो दिस? देखो बेटा आपके पास ये जो y की वैल्यू ना यहाँ पर, दिस ओवर हियर इज 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ पर दिखाया है, ये इसमें बताया है खास तौर पर. This is 2. So you have to label the points as well and you have to be focused on the point as well कि जब मैं इस ग्राफ को शिफ्ट करूंगा देखो डाउनवर्ड, तो ये ग्राफ ये हो गया y, ये 1 है यहाँ पर वैल्यू. ये देखो 2 स्टेप नीचे शिफ्ट हुआ ये, बिकॉज यहाँ पर भी वैल्यू ओवर हियर द वैल्यू इज 1. ये y इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो मैं इसको एक स्टेप नीचे लेकर आया, फिर दूसरा स्टेप नीचे लेकर आया. एंड द एसिम्प्टोट सिमिलरली बिल्कुल ये भी बेटा 1 स्टेप एंड 2 स्टेप नीचे आ गए. यानी अगर मैं बात करूं तो ये बेटा ये 1 से -1 पर आ गए होंगे. This point over here is the point on the x-axis. We have to label these 2 points कि अब ये जो q coordinate है, this has become now p/2, 0, and this p point has become now -1, -2. This is how you're going to draw the graph. अच्छा, you don't need this to draw. ये नहीं होना चाहिए आपके पास. So मैं तो सिर्फ डायग्राम के कंसेप्ट्स आपको चीजें दिखा रहा हूँ. Secondly, they have asked you कि भाई you have to draw this graph. ये ग्राफ कौन सा है? This is the reflection and this is horizontal reflection. ये y axis के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा. This is going to be reflect with the help of y axis. तो बेटा जब ये y axis के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, so I have drawn the same graph है. I'm going to shift this graph from right to left, from left to right. ठीक है ना. अब देखो बेटा यहां पर this point over here q, it was 3/2, 2. So obviously जब x से रिफ्लेक्शन होगी तो बेटा -3/2, 2 हो जाएगा. और बेटा ये जो पॉइंट था -1, 0,
P पॉइंट जब इसकी रिफ्लेक्शन होगी तो ये 1,0 हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर थोड़ी सी लेबलिंग कर देता हूं। ये P पॉइंट देखो यहां पर इट इज 1/2, 3/2 यहां पर है। दिस इज द x वैल्यू ओवर हियर इज 3/2। तो बेटा y x वैल्यू is going to be here, which is 1. So your P point is going to be reflected here. P point is going to be reflected here is become 1,0. And this is the -1. Over here it is -1. The x value is -1. So थोड़ा सा आगे जाएंगे. This one is -1. This one is going to be -2. तो थोड़ा सा आगे जाएंगे. This one is going to be -3/2. The y value remains same. ये आपके पास Q पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गया. रिफ्लेक्शन अभी मैंने दिखा दी of these 2 points. Now what I'm going to do, I'm going to just reflect this on the right hand side. ठीक है ना. यहाँ पर this is how you're going to reflect the graph. So somewhere around this is the reflection of the graph. The red one. ये सब remove हो गया. ठीक है ना. The red one you have to draw. You don't have to draw this line. ये asymptote remains same. वो आपने draw करना है वैसे ही. But this is something that you don't have to draw. ये नहीं होना चाहिए. So this is the reflection of f of -x. This is the graph of f of -x. Now what's the next thing? Next thing is on each sketch you must clearly state the coordinates of the maximum minimum point that we already have done. Equation of the asymptote, that's what we have done. सही ना. हमने वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी है. अच्छा यहाँ पर पिछले वाले ग्राफ में we have to mention the equation of the asymptote like y equals to -1. Over here the equation of the asymptote is y equals to 1. It has something to do with the reflection की वजह से कोई change नहीं आया. Okay, so we have question number 5. It says the curve C has the equation. Okay, fx is a quadratic expression. Y equal to fx is the curve. It is a quadratic curve. The maximum turning point on C has a coordinate -2 and 12. Since it has a maximum turning point, तो बेटा ये concave down बन रहा होगा. इससे मुझे ये पता चल गया. C cuts the negative x-axis at -5. Okay, C कट कर रहा है negative x को -5 पर. उसका एक x इंटरसेप्ट पता चल गया -5,0. ये भी पता चल गया. They got the point -5,0. ठीक है ना. तो जब ये कह रहा भाई फाइंड द fx फंक्शन मालूम करके दिखा दो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन. So we have got couple of hints here. पहला हिंट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट. सेकंड हिंट मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है तो कॉन्केव डाउन होगा. टर्निंग पॉइंट हमारे पास -2,12 है. दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट. और इसका सी कट कर रहा है कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है -5 पर. तो बेटा एक पॉइंट एक एक्शन जैसा मेरे पास -5,0 फाइंड हो दिस. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं यहां पर ही एक काम करता हूं. वी नो दिस कर्व की कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म ये होती है. So we know this कि हमारे पास बेटा h की वैल्यू, this turning point is the value of h and k. So value of h is going to be -2. So minus +2. The value of k is 12. Now the thing is what should be the value of a. अब a की वैल्यू मालूम, कोई हमें डायरेक्टली ऐसा जज नहीं करना. We know the one of the point
of the curve. So what we are going to do, we are going to put the value of y 0 and the value of x is minus 5. Since this point lies on the curve, जब भी मैंने x की जगह minus 5 and y की जगह 0 put कर दिया. Next thing what I'm going to do, I'm going to put minus 5 plus 2 minus c square is 9 plus 12. So the value of a is going to be minus 12, 9a. The value of a is going to be minus 12 by 9. The value of a is going to be 4 3s are 3 4s are 3 3s are 9. So I got the value of a now. I'm just going to copy this whole working in the answer space. I'm going to put this value of a in this equation. I'm going to have the quadratic equation. देखो y equals to minus 4 by 3 x plus 2 whole square plus 12. ठीक है ना, मैं इसको अब एक्सपेंड कर देता हूं. a square plus 2ab plus b square y equals to minus 4 by 3 x square minus 16 by 3 x minus 16 by 3 plus 12. Minus 16 by 3 plus 12 is going to be last two terms, so like terms है ना, दोनों numbers हैं. Minus 16 by 3 plus 12 is going to be 20 by 3. ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई. अच्छा, इस फॉर्म में भी it's good to write in this form as well. This is also your answer. और आप इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं. ठीक है ना, both are good to write. Next they are saying the line L1 has the equation y equal to minus 4 by 5x. अब देखो इन्होंने कर्व नीचे बनाया हुआ भी है और एक लाइन L1 बताई हुई है. It is intersecting the curve. यही वाला कर्व क्वाड्रेटिक कर्व है जो अभी हमने इसकी इक्वेशन निकाली है. लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को. Given line L2 is perpendicular to L1, L1 और L2 के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है. They are perpendicular to each other. Line L1 is passing through. Given that L2 is perpendicular to L1 and passes through minus 5, 0. ये L2 बेटा पास कर रही है minus 5, 0 से, जो कि कर्व का भी पॉइंट है. Find equation of the L2, writing your answer in the form of y equal to mx plus c form, where m and c are the constant to be found. तो देखो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है. ऑब्वियसली लाइन L2 is perpendicular to line L1. So do we know the equation of the line L1? Yes, we know the equation of the line L1. यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग शो कर देता हूँ ताकि डायग्राम भी साथ में हो. y equal to 4 by 5x. तो लाइन L1 का ग्रेडियंट is going to be 4 by 5. The coefficient of x. What will be the gradient of line L2? minus 5 by 4. Negative reciprocal. अच्छा. Now we have the equation of the line L2. हमें obviously ये बात पता है, लाइन L2 की इक्वेशन के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. तो लाइन L2 की इक्वेशन के लिए we should know the point and the gradient. We know the point gradient and we know the point minus 5, 0. देखो लाइन L2 कहां से पास कर रही है? minus 5, 0 से. तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं करनी. y equals to y minus y1, y1 is 0, m x minus x1. x1 is minus 5, so it will become plus 5. So y equal to minus 5 by 4 x minus 25 by 4. This is the equation of the L2. I'm just copying down. मैं यहाँ पर आंसर स्पेस में कॉपी कर रहा हूँ. Now they are saying define the region R shown shaded in the figure 2 using inequalities. Okay, so how do we define these inequalities? कि जिसमें बड़ा ये shaded region R आ रहा है.
देखो बेटा, the shaded region R is inside this curve. So curve equation, we know this. The curve equation is this one. मैं यहां पर बस कॉपी कर रहा हूं कर्व की इक्वेशन. अब देखो कर्व के अंडर रीजन है आपके पास. So we are going to write less than equals to, ठीक है ना. लाइन L1 की इक्वेशन के ऊपर, L1 के ऊपर शेडिंग हुई है. So we are going to write y is greater than equals to 4/5x. This is the equation of the line L1. और line L2 की इक्वेशन we have already found out y equals to -5/4x -25/4. And we have the shaded region above this line as well. So we are going to write y is greater than equals to -5/4x -25/4. So we have got these three inequalities here. Look, we got the three inequalities here. That is defining the region that is shaded over here. Part C. ठीक है जी. End of the question. Now we have question number 6 here. In question number 6, they are giving you the equation 2. Okay, we have in this question you must show all the stages of going solution relying on calculator technology are not acceptable. They are saying 2xy minus x square equals to 50. I said okay, and y equal to, and y minus x cube plus 6x equal to 0. These are two equations. Let us show this equation. You have to show this equation. So the only way to show this equation is to solve them simultaneously. क्योंकि यहाँ पर देखो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पर भी स्क्वायर वाली इक्वेशन है. So how do we get the x variable equation in terms of only x and which has the power 4? The only way here is solve them simultaneously. So what I'm going to do, I'm going to just copy these two equations. 2xy minus x square is equal to 50. Y minus x cube plus 6x equal to 0. So we have to show this equation. So what I'm going to do, I'm going to find out the value of y. I'm going to make y the subject in the second equation. X cube minus x. I'm going to put this y value over here in the first equation. X cube after putting up this value y, 2x multiplied by x power 3, it becomes x power 4. 2x multiplied by 6 minus 12x square minus 3x square equals to 50. You're going to have a quadratic. This is basically called biquadratic or quadratic equation. Minus 14x square minus 50 equal to 0. So do we have the same equation? Yes, this is the same equation. But no, this is not minus 40. This is going to be minus 15x square. Minus 12x square minus 3x square is minus 15x. So we have got the same equation here now. So this is equal to 0. Okay, now they are saying hence solve the equation simultaneously. This is what we were doing. हम इन दोनों इक्वेशन को हमने जब सब्स्टिट्यूशन करी तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का पहला स्टेप ही होता है गिविंग आंसर in fully simplified third form. So basically they want the value of x and the value of y in this third form. So what I'm going to do, I'm going to break the middle term here. I'm going to use this equation b. Now this one is a disguised quadratic equation. As you know, hidden quadratic equation. Why? Because the ratio between the lowest power variable and the highest power variable is 2:1. The ratio between these two variables power is 2:1. So we can treat this equation as a quadratic equation.
treat this as a quadratic equation. This is not exactly the quadratic equation, but you can do everything what we are doing in the quadratic equation. Like we can do the middle term factorization, middle term breaking. So what I'm doing, I'm going to break the middle term, or you can also take the common here as well. First, I'm taking the common 2 here in the whole equation. No, there is nothing common. Sorry. What I'm going to do, I'm going to go for the middle term breaking here. 2 minus 50 is minus 100, and minus 20x square plus 5x square minus 20 into plus 5 is also minus 100. So I'm going to break the middle term here. After breaking middle term, I'm going to take the common. This is 2x power 2. I'll get x power 2 minus 10. And I'm going to take the 5 common here, x power 2 minus 10. I'm going to have 2 separate equation, x square minus 1 equal to 0, or 2x square plus 5 is equal to 0. And I have x square equals to 10, x square equals to minus 5 by 2. Now, if you take the square root on both sides, you will get the answer of x square from this equation. आपके पास x की value, we're going to have the x value as plus minus root 10. And from this equation, I will not get any answer. क्योंकि बेटा root के अंदर minus, we cannot have an answer because of this. So I'm just going to write not possible. ठीक है ना? Once I got this x value, a y value निकालनी है from this x value. So I'm going to use the equation like this. I can use the equation this because it has the y as the subject. So I can use this equation, or you can also use this equation. किसी भी equation में बेटा y x की value put in कर लो, you get the value of y. तो मैं इसको use कर रहा हूँ y equal to x cube minus 6x. I'm going to have y equals to x cube minus 6x. I'm going to put the value of x equal to root 10. तो बस इसकी वर्किंग और से देखना, रूट 10 का क्यूब. व्हाट इज रूट 10 का क्यूब? विदाउट कैलकुलेटर काम करना आपने. सी बहुत इजी है. रूट 10 क्यूब मींस रूट 10 into रूट 10 into रूट 10. So it is going to become root 10 into root 10 is going to be 10, and that root 10, the leftover root 10 is going to be same. Root 10 into root 10 is 10, only 10, and root 10 is going to be remain same. It is going to become minus 6 root 10. So 10 root 10 minus 6 root 10 is going to be 4 root 10. This is the value of y. ये आपके पास एक साइड निकल कर आ गया x और y का. The same thing I'm going to do when we have x is equals to minus root 10. So y equals to x cube minus x. अब देखो माइनस पर क्यूब है, माइनस रिमेन सेम. रूट 10 into root 10, again it is going to be root 10. माइनस पर क्यूब है ना, चलो सब पे माइनस लगा लेते हैं हम. माइनस रूट 10 माइनस रूट 10, ठीक है ना. माइनस 6 रूट 10. नाउ दीज आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर. ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस. root 10 into root 10, 10, and the root 10 left over is root 10. You get minus 6 root 10. You'll have the value of y minus 16 root 10. You have the value of x, you have the value of y now. ये आपके पास एक और कॉम्बिनेशन निकल कर आ गया. अच्छा एक there's one by mistake. यहाँ पर this is going to be minus root 10. So this has become plus. It is sorry, यहाँ पर नहीं, not over here. यहाँ
ये -√10 था, यहाँ पर भी मैंने प्लस लिख दिया, दिस हैज बिकम प्लस प्लस और ये -4√10 हो गया। ठीक है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर, ये एक साइड आ जाएगा, दिस इज दी आंसर। ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है और ये भी माइनस है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज we have the equation y equal to fx. Okay, what is fx? We don't know. They are asking you, they are telling you if f dash x, the first derivative is this one, the second derivative is 0 when x equal to 4, find the value of a. So the first derivative, you can see there's a constant a, they're asking you to find out the value of a. अब एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे मालूम करें? तो देखो बेटा, मैंने क्या करा, since they have given us the second derivative, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को पिक करा जिसमें a आ रहा था, and a is again a constant, not a variable. तो मैंने लिखा 2x पावर -1/2, ax पावर -2 + 3. So what I'm going to do, I'm going to take the differential again to get a second derivative. सिंप्लीफाई करवाया मैंने इसको, यानी तमाम x वेरिएबल को should be in the numerator. I got the second derivative, that is f double dash x. What is f double dash x? 2 multiplied by -1/2. Power multiplied by coefficient. 2 multiplied by -1/2 is -1. मैं बल्कि subtract 1 in the power. -2 multiplied by a, -2a, subtract 1 in the power. Derivative constant is 0. So I got f double dash x as -x power -3/2 -2a x power -3. So I got the second derivative here. Now they are saying second derivative is 0. The value of second derivative is 0. Kab? When I put x value as 4. I put the value of x equal to 4 now. The second derivative is 0. So according to their hint, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1/4 पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस की जगह पे रहेगा, this minus remains same, 4 पावर -3/2 when it becomes a reciprocal, so 1/4 पावर +3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 4 का क्यूब इन द डिनोमिनेटर। इस साइन पे कोई फर्क नहीं आएगा, पावर नेगेटिव बिकम पॉजिटिव ओवर हियर। नाउ you have to solve it, we have to simplify it basically. So 4 power 3/2, I have just break the power of 4 power 1/2 and power 3 here. 3/2 का break the power 1/2 into 3 और 4 power 3 over here 64. Now 4 square root of 4 is 2, 2 power 3 is 8. And 2 1s are 2, 2 16s are 2 32s are 2 1s are 2 32 are 64. So I got a complete simplification here, a/32. Now if I put the value of fraction on the right hand side, a/32 is equals to -1/8. I'm going to put this 32 in the numerator, cross multiplication. The value of a is going to be -4 here. The hint which I've used for the second derivative, I got the value of a, that is -4. Once I got this value, they are saying function of x is 8√3 when x is 12. Find fx in terms of giving each term in the simplest form. तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है. In order to find out the f of x, you need to integrate this first derivative. इंटीग्रेट करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो यहां पर fx आ जाएगा. So I'm just copying down this function of x here now. और मेरे पास कंसीडरिंग द a की वैल्यू आ गई है, so I'm going to put the value of a here, which was -4.
I'm just writing down 2 root upon root x था, x पावर -1/2 हो जाएगा, the value of a is -4, x पावर -2 हो जाएगा, ये +3 हो गया। तो सेम टाइम पे मैंने एक ही वैल्यू भी पुट कर दिया और वेरिएबल को भी ऊपर ट्रांसफर कर दिया, सो दैट वी कैन टेक द इंटीग्रल प्रॉपर्ली। सब जगह इंटीग्रल ले रहा हूं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे f' का इंटीग्रल fx हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे ऐड वन दी पावर डिवाइड बाय द पावर, ऐड वन दी पावर डिवाइड बाय द पावर, ऐड वन दी पावर डिवाइड बाय 3 के साथ x वेरिएबल की पावर 0 है, वो नहीं है तो उसकी पावर 0 है, देन प्लस c over here I got f of x -1/2 plus 1 1/2, अब देखो f of x 8/3 और x12 है, so these are the values that were given to find out the value of c। तो देखो ये मैंने लिखा 8/3 in terms instead of f of x I got x is 12, सही है ना, so I'm going to have the value of c here now। अब देखो यहाँ पर 4 1s are 4 3s are 12, what is 4 root, देखो यहाँ पर 12 को मैंने लिखा 4 into 3, this has become 1/3, 12 3s are 36 plus c, 4/3 is going to be 2/3, 1/3 plus 36, it is going to be 3/36 is 108 upon 3। यहाँ पे मैंने एलसीएम लेकर बेटा जो ये टर्म्स जिनमें मतलब नंबर्स थे, कोई रूट नहीं था, इनको साथ में कर लिया। आई गॉट 8/3, 4 2s are 8/3, this has become 109 upon 3, 8/3 if you cancel it becomes 0, minus 109 upon 3 is the value of c। now I'm going to put this value of c in the integral equation, in f of x में put करूंगा। This is going to be the value of fx, ये आपके पास बड़ा आंसर निकल कर आ जाएगा।